अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे कैन और कुड का मॉडल वर्ब। कैन सबसे पहले आपको बता देते हैं। कैन जो है इट ऑलवेज यूज फॉर एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। यानी अगर आपको पता है कि आप कोई काम करने के काबिल हैं एंड यू हैव द एबिलिटी टू डू दैट वर्क, लाइक लेट्स सपोज आई एम हियर टू टीच, आई एम टीचिंग यू, सो दिस इज माई कॉन्फिडेंस। व्हेन आई हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन एनीथिंग कि मैं ये काम कर सकती हूँ, या आई थिंक कि आई एम एबल टू perform that work, I am able to do that work, at that time I will be able to use modal verb in which can should be there. ओके, सो मॉडल वर्ब में आज हम कैन पढ़ रहे हैं। तो कैन के अंदर क्या आपकी डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज्ड when the possibility is there, permission, you want to take permission and you think that you are able to do something, and you know that you have a confidence to do or to perform that work or task. Okay, so let me give some examples for your convenience, and let's make some examples. I can teach English, this is my confidence and this is my ability, so I can say I am able to teach English, and I can teach English. By the way, sorry for the lacking of my tongue. I don't know what happens with me whenever I speak in fluency, so I get my tongue lacked. Okay, so ignore that. Anyways, so it can be rain today. अच्छा, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बारिश हो सकती है, एंड पॉसिबिलिटी 50% है, लाइक 50% चांस, 50% इज बारिश हो सकती है और 50% इज बारिश नहीं हो सकती। सो एबिलिटी का मैंने बता दिया और कॉन्फिडेंस का बता दिया। अब परमिशन के लिए कहना है प्लीज़ कम इन। अच्छा, ये इनफॉर्मल है, यानी कि आप अपने बड़ों के साथ अगर यूज़ करेंगे तो हम कुड यूज़ करेंगे, कुड यू प्लीज़। अच्छा, कुड जब हम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा फॉर्मल होता है, ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होता है बड़ों के साथ, यानी एल्डर्स के साथ हम वो यूज़ करते हैं, तो हम कुड यूज़ करेंगे। कुड जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी जो है हमने पढ़ा कैन। लेट मी गो थ्रू। कैन इज अ मॉडल वर्ब। जो मॉडल वर्ब के जितने भी रूल्स हैं वो सारे फॉलो होते हैं। दे ऑलवेज टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे मेक देयर नेगेटिव बाय देयर ओन, दे आर ऑलवेज सेम फॉर ऑल द जेंडर्स, लाइक नो थर्ड पर्सन सिंगुलर एस ई एस, कुछ भी ऐसा इंक्लूड नहीं होगा। फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट ही रहेगी। इसके अलावा जो है अब आपने कुछ एग्जांपल्स बनानी है। अब आप देखें कि आप क्या काम करने के काबिल हैं, आपकी क्या एबिलिटी है या क्या पॉसिबिलिटी है। और जैसे आपने पेपर्स में एफर्ट पुट की है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की है, तो आप बोलें आई कैन जस्ट गेट द पोजीशन। सो आपका जो है यानी कि पॉसिबिलिटी है, आप कितने परसेंट है वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस आपकी एफर्ट पे डिपेंड करता है। इट इज़ वेरी सिंपल, क्वाइट ईजी। सो यू नीड टू जस्ट मेक three examples in comment section, and do let me know, are you enjoying the series of modal verb? Inshallah ta'ala I will see you with good modal verb inshallah ta'ala in my next video. So keep watching, keep learning, keep making notes, and do let me know, give some positive response, which I am just putting effort for you guys, that you can just learn English in an easiest way. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.